substantial role in a Shah Rukh Khan film. Too good to be true film for any actress. You did mention it and record it and put it out there. That is too much of confidence and expectation that you have out of me, which I'm happy and very proud of. Maybe you are taking a harder way by concentrating on performance-oriented roles. Generally, films where the female presence is lighter than the male's presence, the entire industry for some reason believes that I will not even consider those films. Do I know I get to do an Uchiya building and Tantanatan? I will do a Judwa for that because I really want to dance on those songs. Avitsa, what are you talking? First of all, why are you scared? He's like, I'm very scared of intelligent women. So I said, oh, you have one back home. He's like, yeah, and what makes you think I'm not scared there? So you love the fact that it got its validation on OTT. You're not happy with the way it was released in the theatres. Not just with Dag, Faridoon, if you see all these medium budget films, small budget films, not really shouldered by the big conventional stars, get this very stepmotherly treatment when they release at the box office. How do you strike this balance that you support certain causes and the fact that where you came from, but at the same time you're not really hating people who are naturally having privileges? I don't hate the sinner. I hate the sin. So I have a problem with the sin and not the sinner. Hi, this is Taapsee and you're watching Connect Cine with Faridoon. आज हमारे साथ में एक ऐसी एक्ट्रेस हैं who has carved a niche for herself by doing films at her own terms and conditions. We're talking about Taapsee. She has delivered a fantastic performance in Dunky, and it's a huge pleasure to have you with us, Taapsee. Thank you very much for joining us on Connect Cine. Thank you, Faridoon. So मैं एक हमारा पुराना इंटरव्यू में देख रहा था और हमने डिस्कस किया था डंकी के बारे में, और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि क्रेडिट जो है वो शाहरुख खान की फिल्म में हीरोइन का क्रेडिट पहले आता है. सो मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब आपका नाम मैंने पहले देखा, तापसी पन्नू, एंड आफ्टर दैट शाहरुख खान उसके बाद में. ये कितना बड़ा एक आपको एक खुशी का मकाम है आपके करियर में कि इस तरीके से आपका नाम पे सबसे पहले आ रहा है, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म में. एक्चुअली ये ऐसी चीज़ थी कि पता होने के बावजूद आई फेल्ट इट जैसे कि ये सरप्राइज था, क्योंकि जब मैंने एक्चुअली में देखा उस टाइम पे तो एक्साइटमेंट थी पिक्चर देखने की, तो थोड़े टाइम के लिए शायद मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि अच्छा टाइटल में मेरा नाम पहले आएगा. फिर जैसे वो आया, एंड आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग इट विद माय पेरेंट्स एंड अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स. प्राइवेट से एक छोटी सी स्क्रीनिंग करी थी रिलीज के कुछ दिनों पहले, एंड जैसे ही वो आया एवरीबडी टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी. सो आई वाज लाइक अच्छा ओके. सो because everyone was so pleasantly surprised, and I also was pleasantly surprised in spite of knowing that something like this happens, because it's just too good to be true. To actually see, मैंने सुना है बाकियों के साथ होता है, देखा है बाकियों के साथ, बट अपना नाम ऐसे देखना वो पहली बार था, तो वो एकदम से एक झटका तो लगता ही है. Right, having such a substantial role in a Shah Rukh Khan film, that must have been, I think, significant as well. Yeah, and a Shah Rukh Khan and a Rajkumar Hirani film. Course. Like, matlab, too good to be true kind of a film for any actress. मुझे पता है ये 2 साल पहले, जब 3 साल पहले ऑनेस्टली 2020 में ये पिक्चर आई थी मेरे पास, तो उस समय जब मैंने ये पिक्चर की स्टोरी सुनी ना, इट वॉज लाइक कि ये रियल हो रहा है, ये एक्चुअली में मुझे इतना बड़ा रोल दे रहे हैं. क्योंकि पिक्चर की स्टोरी अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो है कि इस लड़की को बाहर जाना है, एंड ये लड़का हैपेंस टू कम इन हर लाइफ एंड फॉल्स इन लव विद हर एंड वांट्स टू हेल्प हर अचीव हर गोल्स. इट इज टू मच ऑफ अ सॉलिड गर्ल्स स्टोरी एज मच एज द गाइज स्टोरी. इट्स अ लव स्टोरी, और आज की डेट में आपको शाहरुख खान के साथ लव स्टोरी करने को मिल रही है, वो भी इतने बड़े सेटअप में राजकुमार हिरानी की फिल्म के अंदर. ये तो कुछ, और मैंने ना ये 2 साल 2.5 साल किसी को कुछ बोला ही नहीं इस बारे में, अपार्ट फ्रॉम मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो मेरे फैमिली है, उनको थोड़ा बहुत पता था कि ये कितना सब्सटैंशियल रोल है, कि मेरे नंबर ऑफ वर्किंग डेज आर द सेम. ये सब बहुत ही करीबी लोगों को पता था, और मैंने जानबूझ के ये चीज़ें बाहर ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि एक तो वो नज़र लगने का डर ही रहता है कि क्या पता कुछ बदल जाए, एडिट में आपका कुछ पोर्शन ना रहे, फिर क्या होगा. हालांकि राजू सर वॉज वेरी क्लियर कि भाई यही स्टोरी है, यही होने वाला है, यही रहने वाला है. बट
it, as I said, it was too good to be true. तो I did not want to celebrate it जब तक कि एक्चुअली में हो नहीं जाता. तो इसलिए मैं बहुत चुप थी, मैंने किसी को ज़्यादा बोला नहीं. फिर जब पिक्चर रिलीज हुई, I got such surprise calls from people, from journalists, from regular audience, because they were pleasantly surprised to see my presence in the film throughout and to have that kind of a presence in a Shah Rukh Khan Rajkumar Hirani film. Especially क्योंकि Shah Rukh sir की जो films हैं, at least the last 2 films are about his character and his character only. Right. So they are title roles of his character. So this was such a different film that everybody were like very pleasantly surprised to see a girl having this kind of role. और मेरे लिए मैंने सोचा कि मेरे करियर में ना वो फिल्म में सबसे ज़्यादा काम करी है, सबसे ज़्यादा बड़ी माइलस्टोन बनी है, जिसके अंदर लोगों ने कुछ उम्मीद ही नहीं करी थी शायद. चाहे वो पिंक हो, जब लोगों को लगा था सिर्फ बच्चन सर की फिल्म है, तो लड़कियां तो मतलब वैसे भी न्यू हैं तो उनका क्या ही रोल होगा. चाहे बेबी हो, जिसके अंदर तो मेरा एक्चुअली में सिर्फ 7 मिनट का, मिला जुला के 7 मिनट का स्क्रीन स्पेस था पूरी 2.5 घंटे की फिल्म में. तो चाहे वो अब हो, डंकी हो, जिसके अंदर शायद इससे पहले लोगों ने नहीं इमेजिन किया था कि इस तरह की प्रेजेंस होएगी. तो आई थिंक दिस इज हाउ फिल्म्स वर्क द बेस्ट फॉर मी, एंड आई वाज वांटिंग टू downplay it a little bit before the film releases, and thankfully it is now going as per I thought. Right. In fact, बेबी के बाद भी आपसे बातचीत हुई थी, एंड वो आई थिंक 7 मिनट का रोल भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया था. एक बहुत ही दिलचस्प सा एक आई थिंक कोइंसिडेंस मुझे लगा कि आपका जो किरदार है, कि आपकी फैमिली they are having a struggle and you want to just get them out of that struggle. और आपकी जो आपकी ज़िंदगी रही है, आपके फादर बहुत ज़्यादा किफ़ायत के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने हमेशा ज़ोर डाला है, एंड बेसिक चीज़ों के लिए भी उन्होंने हमेशा इंसिस्ट किया है कि आप सेविंग्स करें. आप उनके लिए एक बार आपने पेन आपने उनके फादर्स डे पे आपने उनको दिया, और उस पर भी उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हें ये बचाना चाहिए था पैसे को. मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुझे एक कोरिलेशन भी मुझे नज़र आया आपकी पर्सनल लाइफ और इस फिल्म के कैरेक्टर से. Did you get a few certain emotions from your personal experiences as well? एक तरह की जब आपकी एक तरह की बेसिक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है, तो हालांकि ये तो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली मैंने पोर्ट्रे करी है इस पिक्चर के अंदर, तो बट ये एक जब आपके मिडिल क्लास आप तबके के होते हो तो आपका काफ़ी चीज़ें ना ओवरलैप करती है सेंसिबिलिटी टाइप वाइज. जैसे कि आपका सेविंग मोड हो, से आपकी रिक्वायरमेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी तुम उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, नहीं तो तुम उन चीज़ों को अपनी लिस्ट से हटा ही देते हो कि तुम्हें लगता है तुम वो चीज़ें ऐसे मान लोगे कि तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं थी. ये नहीं कि ये सोच इससे बेटर है, ये मतलब तुम ऐसा ना लगे कि तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसलिए तुम वो चीज़ें नहीं ले रहे हो, तुम ये मानो कि तुम्हें चीज़ें पसंद ही नहीं है. तो वो जो तरह की मेंटालिटी होती है, ये एक जनरल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग के अंदर होती है. तो ये वो वाला जो सेंसिबिलिटी थी वो काफ़ी काम आती है कि आप हमेशा ग्लास को ना हाफ फुल देखने के आदी हो जाते हो, तो आप जो आधा नहीं है ना उसको तो आप अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहते हो कि कैसे आप ये जो आधा आपके पास है ना उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कैसे उठाओ. तो मुझे उस तरह का दिखाया था कि मैं अपने फैमिली के सामने कभी भी ऐसा शो नहीं करूँगी कि हमारे पास कुछ नहीं है. हम ठीक है जो भी गया चला गया, बट इन माई हेड मेरा बड़ा क्लियर गोल होता है कि मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी कि क्या रह गया या क्या हमारे हाथ से छूट गया. तो वो वाला जो जुनून होता है ना सिर्फ आगे बढ़ने का, टू मेक लाइफ बेटर नॉट फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली, वो एक बड़ा वो कॉमनैलिटी आ जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, जिसके अंदर आपने इतनी प्रिविलेज नहीं देखी होती बाय डिफ़ॉल्ट. सो वो ऑब्वियसली हेल्प करती है टू परफॉर्म अ लिटिल बिट. एंड हाँ, बाकी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली मैंने. थोड़ी बहुत आप खासा मतलब आप ह्यूमिलिटी का आप एक मुजाहरा कर रही हैं. बट ऑल्सो फरीदून आई मस्ट से एक्चुअली आपका एक वीडियो मैंने पिक्चर के रिलीज के काफ़ी पहले देखा था, मुझे याद नहीं कब किसी ने शेयर किया था मेरे साथ, जब डंकी की कोई बात करी थी और आपने कहा था कि मेरा किरदार जो होगा उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है कि कुछ ये डिफरेंट,
this might be surprise or this might be a trump card of sorts. I remember, I'm not sure. Am I right? There was a video that you made something like that. Right. Yeah, because someone shared it with me and वो उस टाइम था जिस टाइम मैं किसी को बोल ही नहीं रही थी बात ये कि मेरा क्या रोल है. But I know you've known me since quite some time. We've interacted so much. So I was very pleasantly happy, like surprised a little bit that you did mention it and record it and put it out there. That is too much of confidence and expectation that you have out of me, which I'm happy and very proud of, that that I've created that space in your heart and mind. But that definitely like stayed in me ke, there are people like you who do have confidence in my presence in the film, and it was so heartwarming to see that. So thank you so much. I've always had a lot of respect for you as an actor, and the fact that the values that you've always stood for. So मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि that आप how keen you are to be taken seriously as an actor, and that you will not settle for anything which is anything but the best. So and मैंने तो खैर बहुत बार कहा भी है कि एक तरीके का आपने एक जैसे बच्चन साहब ने एक वन मैन इंडस्ट्री बना लिया था अपने आप को, वैसे आप the sort of filmography that you've had, so which is I think which is extremely unique. But Faridoon, strangely not many in your profession itself or in mine or like an audience today, they don't have the time and patience and probably to an extent an analytical skill to understand and assess that unless and until I throw it in their face as a PR article or a PR headline. Because मुझे बहुत सैड बात लगती है कि हमारी आज की तारीख में हमारे मीडिया इंडस्ट्री में हमें स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो गई है कि जब तक 4-5 लोग ये हेडलाइन बना के किसी न्यूज़ की नहीं डालते हैं तब तक हम अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज़ ही नहीं करते हैं. फिर जो हमें फीड कर दिया जाता है हम उसको सच मान के और सही मान के बैठ जाते हैं. बहुत सारे लोग, आपने भी उतनी ही पिक्चरें देखी हैं मेरी जितनी बाकी लोगों ने देखी होंगी इस इंडस्ट्री में, आपके फील्ड के ही और ऑडियंस के भी. बट नॉट मेनी हैव द असेसमेंट एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड where I started and what kind of people I've worked with, what kind of films I have done, and what kind of roles I've had in the kind of films I have done. Not many people have this analytical skill because उन्हें बोल दिया जाता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा वाइड रेंज और वर्सेटैलिटी वाला एक्टर या एक्ट्रेस ये है, तो हम 4-5 आर्टिकल बैक टू बैक अगर पढ़ लेते हैं ऐसे उनके नाम के तो हम मान के बैठ जाते हैं विदाउट गोइंग बैक एंड रियलाइजिंग, okay, wait, let me think. Did this actor do this much or no? It's other actors who did so much more variety and diversity in their roles and films than this actor who's been shoved in our face to believe that this is the actor you should consider as the most versatile or the most diverse actor. So that's the sadness of today's day and age, where the social media or the kind of forced PR-fed articles everybody is consuming and accepting without using their own analytical skills. So there are not many like you who have the power of assessment in them, and I really wish and hope people start using their own assessment and analytical skills than just blindly consuming and accepting these PR articles that's thrown on their faces. नहीं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, कोशिश हमेशा मुझे लगता है कि एटलीस्ट पर्सनली मेरी रहती है कि इवन ड्यूरिंग माई रिसर्च मुझे एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती. मुझे लगता है कि दैट इट्स समथिंग विच इज़ जो कि एक फिल्म जर्नलिज्म से काफ़ी एक एसोसिएशन है गॉसिप से रिलेटेड, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. आई जेन्युइनली फील आई थिंक जो क्राफ्ट है, बहुत से लोग क्राफ्ट के बारे में और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, एंड अगर उसके बारे में बात की जाए तो कम से कम इट इज़ समथिंग दैट इट्स अ सीरियस डिस्कशन, एंड वो फिर वो डॉक्यूमेंटेड रहता है. बहुत सी चीज़ें आज से 2 साल बाद 4 साल बाद भी जब लोग जब देखेंगे, आई थिंक दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट रादर देन समथिंग व्हिच इज फ्रिवलस. सो ये आई एम ग्लैड दैट आपने नोटिस किया. दैट इज एंड आई थिंक यू बीन हैविंग अ फैंटास्टिक जर्नी, एंड आई थिंक डंकी इज व्हेन आई एम सीइंग ऑल दीज रील्स ऑफ यू, सारा आपका जो आलू पोटैटो एंड बुड़ ऑल दोस रील्स दे कीप ऑन. मैंने एक बार 2 बार पिक्चर देखी. सो you enjoyed the Rajkumar Hirani trademark humor? Oh yeah, I did, because it's so different from
द काइंड ऑफ स्टफ आई हैव डन सो फार, मेरे लिए कॉमेडी मैंने जब क्लोजेस्ट टू कॉमेडी सो फार is what I have done in a David Dhawan film, and it's a very different kind of comedy where I don't get to do too much of comedy in those films. I didn't get a chance to do too much of comedy myself. It was more for the boys. But this was the time I got to do comedy. I got to do emotion. I got to do everything possible. You can get to do as an actor in that kind of commercial tone, which was Raju sir की फिल्म में बड़ी playing to the gallery for the audience and very unapologetically for the audience होती है. It's not about, your interpretation, and it gives you a message to take back home. But it is not leaving a scope for you to think of anything else other than what he wants you to think. Right. So वो जो भी होता है वो एकदम correct to the audience in your face वो बता देते हैं, चाहे वो comedy से हो चाहे वो emotion से हो. तो मैंने ज़्यादातर जो पिक्चरें करी हैं वो ज़्यादातर बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट होती है, वो नुआंसेस वाली होती हैं, या फिर वो मतलब डायरेक्टली तुम नहीं बोल रहे हो बट ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देते हो सब कुछ, वो ज़्यादातर ये वाली होती हैं. राजू सर का डिफरेंट वे ऑफ नैरेटिव है, एंड उनकी अपनी एक ऑडियंस है, उनका अपना एक स्टाइल है, एंड नथिंग इज राइट और रॉन्ग. एवरी डायरेक्टर हैज़ देयर यूनिक स्टाइल ऑफ नैरेटिव. तो पहले कुछ दिन तो मुझे ये समझने में लगे कि इनकी पल्स या इनकी वेवलेंथ कैच करने में लगी, क्योंकि मैंने नहीं किया है इस तरह का काम पहले. तो थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि राजू सर बड़े ही एडिटिंग माइंड से डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका तरीका, उनका दिमाग में पहले एडिटेड सीन होता है और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्टर्स प्ले आउट करें जो उनके दिमाग में एडिट ऑलरेडी हो चुका है सीन. तो उनका तरीका मेरे को अपनाने में और समझने में कुछ दिन लगे. बड़ा ही पहले तो फ्यू डेज आई वाज वेरी लॉस्ट फर्स्ट फ्यू डेज. समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे टेक्स पहले 1-2 टेक में ही ओके हो जाएं. तो कि मुझे समझ में आ जाए जल्दी डायरेक्टर को क्या चाहिए. मुझे लगे कुछ दिन, बट आई थिंक इवेंचुअली व्हेन आई कॉट इट, आई रिमेंबर राजू सर ऑल्सो कमिंग एंड टेलिंग मी कि अब तुझे समझ में आ गया. मैंने कहा हाँ सर, मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, मैं सीख जाती हूँ. तो आई रिमेंबर टेलिंग हिम दैट अब आप मुझे कुछ भी बोलो करने को, मैं 1-2 टेक से ज़्यादा नहीं लूँगी ये करने को. सो आई टुक इट अपॉन मी एज अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज इनकी फिल्में कंज्यूम हो रही हैं अक्रॉस फैमिलीज एंड दे लव इट सो मच. तो डेफिनेटली दिस इज अनदर टाइप एंड स्टाइल दैट आई शुड लर्न एज एन एक्टर. तो वो मैंने सीखा, हाउ एन एडिटेड माइंड डायरेक्ट्स, व्हाट एन एडिटर टर्न डायरेक्टर wants from an actor. So this was a very different and new style of performance and conceiving a scene, which I learned from him, which I have actually changed as an actor a little bit after this film. I have understood the pulse when you want to play this kind of comedy. तो तुम्हें किस तरह के nuances करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So I have really learned a lot over the last 2 years. Right. एक बहुत मुझे लगता है कि at some stage आपके जो interviews हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनेगी. बिकॉज आप जब बात करते हैं उसमें आपके बात करने का जो अंदाज है, आपके जो नेचुरल जो डायलॉग, आई थिंक राइटिंग की एबिलिटी है, वो जो फ्लो करती है, उसमें भी एक बड़ा कमाल का ह्यूमर होता है. जैसे भी आपने 1-2 टेक का आपने जिक्र किया, तो मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें कहा है कि मैं 2 टेक में खर्च हो जाती हूँ. हाँ. सो अभी ये एक्सप्रेशन है 2 टेक में खर्च हो जाती हूँ, वो आई थिंक अपने आप में इट इज वेरी फनी, एंड यू सेड इट वेरी वेरी मैटर ऑफ फैक्टली. तो ऐसा क्या होता है कि 2 टेक के बाद आप यू आर लाइक खर्च हो जाती हूँ? फिर ये इसलिए होता है क्योंकि मैं ना ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं बहुत इंस्टिंक्टिव एक्टर हूँ. तो मुझे जब फीड किया जाता है दिमाग में, डायरेक्टर मुझे बोलता है अच्छा ये सोच के, ये फीलिंग रख के परफॉर्मेंस करनी है सीन के अंदर, तो मैं अपने दिमाग के अंदर पूरा वो फीडिंग ले लेती हूँ और मैं एकदम सोच के भर जाती हूँ. अच्छा अब मुझे ये सब सोच के सीन में घुसना है. और जैसे ही मुझे वो बोलते हैं ओके रोल कैमरा एक्शन, तो वो सारे इमोशन की जो उल्टी है वो मेरी हो जाती है सीन के अंदर, क्योंकि आई गिव इट ऑल आई हैव विथ फुल ऑनेस्टी इन माई फर्स्ट टेक. मैक्स कुछ फंबल हो गया, कुछ गलत हो गया, या मुझे लगा कि नहीं अभी पूरा फील से नहीं हुआ तो एक और कर देते हैं, बट वो मैक्सिमम 2-3 से ज़्यादा ना मेरे से नहीं खींचा जाता सेम इमोशन, क्योंकि वो यूज हो गया है अब 3 टेक के अंदर बैक टू बैक. अब
अगर आपको मुझसे ऑनेस्टी और जेन्युइन वाला परफॉर्मेंस निकालना है, यू हैव टू फीड माई माइंड अगेन, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिला है इन 2-3 टेक्स के अंदर, मतलब कि मैं कहीं कुछ मिस कर रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में कोई चीज़ मिस हो रही है, तो आप मुझे फीड करो कोई नई चीज़ ऐसी जो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई है, तो मैं वो न्यू चीज़, न्यू एंगल से वो सीन अप्रोच करूँगी। अगर आप मुझे कुछ न्यू फीड नहीं करोगे तो मैं खर्च हो चुकी हूँ, मेरे पास सेम डायरेक्शन में आगे चलने का फ्यूल अभी रहा नहीं है, तो वो मेरा तरीका होता है। तो इसके बट every co-actor I work with, every director I work with has a different style. Like इसमें शाहरुख सर, he just like बच्चन सर, he loves to rehearse. He loves to, उनका क्या तरीका है कि वो इतना रिहर्स करेंगे एक सीन को कि वो उसको उस डायलॉग को बोल बोल के अपना बना लेंगे, वो उनका मसल मेमोरी में आ जाएगा ताकि it becomes his own. उनका ये तरीका है अप्रोच करने का परफॉर्मेंस. He's a theater actor who became an actor, right? Film actor. Right. So his way is more like going about rehearsing. And he's a trained actor also. So उनका और मेरा तरीका बहुत opposite है. So for someone like Raju sir to have both of us on set was probably very like diametrically different. It seemed like having Bachchan sir when I was working with Bachchan sir. But इस केस में हुआ क्या? By this time I was like कि मैं इस फिल्म से, इस तरह की फिल्म शायद मुझे कभी दोबारा मिलेगी नहीं, किसी और लड़की को भी शायद बहुत रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह की कमर्शियल फिल्म के अंदर लव स्टोरी में शाहरुख खान के ऑपोजिट होना. ये कॉम्बिनेशन ही वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कॉम्बिनेशन और फिल्म टाइप है. तो आई नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे आई एम ऑन दैट सेट. सो आई मेड श्योर, चाहे मेरे को पता है मेरी लिमिट 2-3 टेक की है, बट आई रियली पुश्ड. आई वाज लाइक कि अगर ये 50 बारी भी रिहर्सल करेंगे ना, आई नीड टू गेट एनर्जी एंड फ्यूल फ्रॉम समवेयर टू कीप गोइंग, एंड आई एक्चुअली डिड. मतलब विदाउट रिग्रेट, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, आई वाज लाइक कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू लेट इवन वन डे गो बाय विदाउट learning something or without trying to make the most of this moment, because people will matlab die to be in my position in this film. So I want to make sure I make the most of it. Amazing. जैसे अभी हमने IELTS का जिक्र किया, IELTS का जिक्र किया, तो it has been presented in a light-hearted राजकुमार हिरानी mode, but जो sentiments हैं लोगों के जो पढ़ रहे हैं वो it is very very serious. So in fact, my wife is a communication skills expert. So यहाँ पर सरी में, कनाडा में, she actually trains people for IELTS training. So she does it professionally. And she was telling me, she saw the film. जो मैंने दूसरी बार जब मैंने पिक्चर देखी तो मैंने फैमिली के साथ में देखी. And she was telling me कि that इसमें जो ये चीज़ है वो बहुत authentic है, because she personally has listened to a lot of sob stories of people कि वो क्या what all is at stake for them, कि वो एक correct band मिलने के लिए what all is at stake for them, how to what extent they are willing to go to just get trained. And the fact is that many of them, they don't have any understanding of the language because of someone is like a truck driver or something else. So did you guys feel a sense of responsibility when you were portraying that? Because as we saw in the Dunky diaries that Raju sir personally visited, and he had a lot of material from authentic sources as well. Yeah, he had a lot of material from authentic sources. Also, one of the writers on the film is Kanika Dhillon, who hails from Amritsar, who is from that land somewhere, जहाँ पे उनको पता था कि किस तरह का लोगों की किस तरह की स्ट्रगल होती है, या उनका अपना टेक ऑन दिस IELTS and the way they prepare for it क्या होता है. Coming from Punjab, she was a huge help and addition to Dunky, especially crafting a female character, which she's been very good at with the films that she has done with me before, Man Marziyan, Haseen Dilruba, now this. So it's a very important female touch and a Punjab background touch that she gave to this film, helped us also to understand. मेरा वो पूरा जो IELTS वाला बुड़ वाला सीन है, वो मुझे याद है, हमने राजू सर, अभिजात और कनिका एंड मी, वी बोथ सैट अ डे बिफोर दैट सीन, क्योंकि वो एक ही डायलॉग है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मतलब मज़ेदार हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही मतलब बकवास लग सकता है. इट कैन गो एक्सट्रीम ऑफ द वे. सो हाउ डू वी मेक इट
एंटरटेनिंग प्रो मैक्स। सो मुझे याद है हमने राजू सर के घर के बेसमेंट में बैठे थे हम चारों, एंड देन कनिका वाज हेल्पिंग मी से अंडरस्टैंड कि अच्छा ये वाला वर्ड वो लोग बोल सकते हैं या इस वाले वर्ड का वो रिप्लेसमेंट होता है, ये नहीं होता। सो कि कौन से वर्ड्स उनके बोलने का ढंग, प्रोनाउंसिएशन किस तरह का हो सकता है, अच्छा ये वाला वर्ड वो नहीं बोलेंगे, इस वर्ड की जगह वो ये वाला वर्ड बोलेंगे। तो हमने एक एक वर्ड जो था उस वीज़ा इंटरव्यू का, वो एक्चुअली क्राफ्ट किया था बैठ के कि क्या क्या एक एक वर्ड होगा, क्या क्या वुड कैसे बोलेंगे वो, यू नो शी वाज रियली हेल्पफुल कनेक्ट इन हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ पंजाबी, हाउ मच ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट kind of pronunciation of those English words and all that. So that really helped jamming with all of us together to create that scene that people are really enjoying. And IELTS wala bhi. So there is a very, even though their approach or their want of learning English is very honest and genuine. Right. But you know how it happens visually is very funny and comic for people who know English. But वो कॉमेडी तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो जेन्युइनली पूरी कोशिश कर रहे हैं ये करने की, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है ये लर्न करना। तो वो जो मिक्सचर ऑफ दैट ऑनेस्टी विद समथिंग सो फनी, हम नहीं ट्राई कर रहे थे उसको फनी करने की। एक होता तुम ट्राई करो, एटलीस्ट यू नो माई अप्रोच वॉज नेवर टू मेक इट लुक लाइक कि मैं उसको जेन्युइनली जोक की तरह अप्रोच कर रही हूँ। मेरे को उसको एकदम ऑनेस्टी से अप्रोच करना है। वो सामने वाले को जोक लग सकता है, बट मैंने अपनी जान डाल दी है। तो वो वाली जो अप्रोच होती है वो सारे टाइम दिमाग में रखनी पड़ती है इन अ कॉमेडी लाइक दिस, बिकॉज योर कैरेक्टर इज नॉट ट्राइंग टू क्रैक अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर योर कैरेक्टर। So and with the right help of the right words, because होता क्या है Faridoon, the thing is to learn a new craft or learn a new art is relatively easy than to unlearn something that you know very well and then act as if you don't know. So अगर आप मुझे कोई नया, जैसे मैंने जब क्रिकेट सीखा, मैंने हॉकी सीखी, मैंने शूटिंग सीखी, मैंने इनफैक्ट अगर सांड की आँख में मैंने वो खड़ी बोली सीखी थी, वो मेरे लिए न्यू थी, तो मैंने वो सीखी और उसको यूज़ करी। That for me was relatively easy than to play a role where I have to behave like मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे ऐसे बिहेव करना है कि मतलब मैं जेन्युइनली एफर्ट कर रही हूँ और फेक नहीं लगना चाहिए मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट। To unlearn my English was more difficult than to learn a new language or a talking style. So that was really hard. I don't know how many people will realize अगर आपको एक्टिंग करनी हो कि आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, for someone who has been talking in Hindi and English since ever is very challenging, and to make it look very believable, and that I felt was very hard. Right. In fact, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है हरदीप, तो उनको एक बहुत बात पसंद आई पिक्चर की कि वो आप पंजाबी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, ज़्यादा पंजाबी आप हैं, सो जब आप कह रही हैं कि बह जाओ, तो मतलब उसमें बह जाओ में एक मतलब एक लय है, एक एक देयर इज अ फ्लो, बह जाओ, हाँ, बह जाओ। You enjoyed speaking Punjabi? So I did. Now again, मेरी पिक्चरों में क्या होता है, काफी लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो ऐसी ही है, तो ये इसके लिए तो आसान होगा। तो पहली बात तो हाँ, मैं सदारनी हूँ, मैंने 10th क्लास तक पंजाबी लिखनी पढ़नी बोली है, मतलब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं पंजाबी में, गुरुमुखी पढ़नी लिखनी आती है मुझे, बट मैं दिल्ली की सदारनी हूँ, मैं पंजाब की सदारनी नहीं हूँ। सो बहुत डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज। मैंने घर में सिर्फ अपने माँ बाप को पंजाबी में बात करते हुए देखा है, मेरे फ्रेंड्स और मेरा कजन्स एंड सिस्टर के साथ कम्युनिकेशन हमेशा हिंदी में रहा है। मेरे पेरेंट्स जब मुझसे भी बात करते हैं या मेरी बहन से बात करते हैं, ज़्यादातर हिंदी में बात करते हैं। अगर वो पंजाबी में भी करते हैं, हमारा जवाब ज़्यादातर हिंदी में ही आता है, क्योंकि हम दिल्ली की पैदाइश हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अब जो भी मान लीजिए, चाहे हमें लिखनी पढ़नी बोलनी भी आती है, बट हमारी स्पोकन लैंग्वेज एट होम इज़ हिंदी, इट्स नॉट पंजाबी। सो व्हेन आई हैव टू मेक माई सेल्फ लुक लाइक आई एम अ पंजाब के पिंड की लड़की, जो मतलब जिसके लिए ये फर्स्ट लैंग्वेज है और प्रॉब्ली द ओनली लैंग्वेज है दैट शी नोज है, तो मेरा जो वो स्टाइल है बोलने का, वो बहुत
वो फ्लो करना चाहिए, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं पढ़ के बोल रही हूँ, न्यूज़ रीडिंग चल रही है यहाँ पे लैंग्वेज की, वैसी फील नहीं आनी चाहिए. एंड प्लस देयर इज अ वे Punjabi was spoken in 90s versus the way that nowadays people talk in Punjabi. That's also a little different. So that also, I had to focus on speaking the kind of Punjabi or the tone that my elder generation speaks in. Because they were the ones who are like portraying my age, like what I was portraying 90s mein in your, late 20s, 30s, and then now they are 60 plus. So मुझे अपने माँ बाप, मामा मामी, चाचा चाची, उनकी पंजाबी जो है ना, वो पकड़ने की कोशिश करनी थी versus my generation Punjabi. So that's why the certain kind of words, that's why the certain kind of lay जो मैंने पकड़ी. And because I'm from Delhi, like most of the Delhiites, I can catch the music of every language has a certain tonal quality. I can catch that well, but for me to be sure of what kind of words to speak, now, if you say on paper, it should be be jao. That is how you will speak. If you read and if you are not that well versed with your language, be jao. But I'll speak bejo. Bejo is more like a spoken way of speaking Punjabi. So these were the small things. It doesn't come naturally to me because as I said, I'm not raised talking in Punjabi. So these are little homeworks that I do that people conveniently look over because they feel कि मैं सरदार नहीं हूँ तो इसको तो आना ही चाहिए भाई, ये तो default है. So I feel like sometimes we are given less credit for the efforts that we put in because they look so effortless on screen. So these were the small things. I'm glad your friend noticed. नहीं, इनफैक्ट आपने तो तेलुगु और तमिल भी, आप तो डायलॉग्स आप अच्छे तरीके से याद करके आपने बोले हैं. So I think you've always been very particular about the language. One more thing which मुझे उतना सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो एफर्टलेस लगा. मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो मिडिल एज्ड पोर्शन है, प्रोस्थेटिक्स तो एक चीज़ होता है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज को लेके आना कि बिल्कुल एकदम मेजर्ड लगे, इट शुड नॉट लुक फोर्स, इट शुड लुक एफर्टलेस. वो मुझे सरप्राइज मुझे नहीं हुआ बिकॉज जिस तरीके के आप एक्ट्रेस हैं, जितना आप एफर्ट करते हैं, कि वो एफर्टलेस भी लाने के लिए आई एम श्योर उसमें भी एक मेहनत है, एक एफर्ट है. most importantly, what was the mental thought process like when you're playing someone who's not your own age? So I was playing someone close to my mother's age group in the older age portions, and एक कश्मकश थी मेरे दिमाग में जो मैंने राजू सर के साथ बैठ के हमने शेयर भी करी, हमने डिस्कस किया कि कितना करना है कितना नहीं करना. बिकॉज माई कैरेक्टर, you see her in the hospital in the beginning, right? I don't want to spoil the end for people who have to yet watch it. But do I want to bring that element in my body language and my behavior throughout, or we want to keep it away? So that was a very conscious call taken by Raju sir कि नहीं, हमें ये चीज़ forefront पे नहीं लानी है. You play your age, but you will not play someone who is very haggard physically, or you don't play someone जिसका मतलब कुछ अंदर से ठीक नहीं चल रहा है. So you don't have to play that. So that was a very conscious call taken, and I just followed what my director wanted me to do. And from there onwards, I thought, okay, then I should follow someone like my mom, who is the same age, who walks a certain way, who stands a certain way. I never feel looking at my mother that she's not active enough. वो आराम से, उनके कोई गोडे वगैरह भी नहीं दर्द करते, उनके मतलब knees and all are pretty much fine. She sits down effortlessly, gets up effortlessly, she walks like very swift. So I started following her body language because I have to play someone that age and not like give out too much about what's happening inside her. So hence that, because I have to keep a kind of a visual reference or recall some person in real to be, that's my process of kind of portraying something that's really not me. I need to base it out of someone I know. So I think I followed the swiftness in the body language or the body postures that my mother has to portray my older portions. Right. So तापसी, एक पुराने इंटरव्यू में हम लोगों की बात हुई थी और आपने जिक्र किया था कि दैट शाहरुख खान बेसिकली स्पॉइल कर देते हैं बिकॉज ही इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स विमेन दैट किसी भी और एक्टर के साथ में आई थिंक पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं.
यहाँ पर भी जो एक जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही कमाल का है, और इवन जो रोमांस के लेवल पे जो मोहब्बत भी आ रही है वो एक यूजुअल तरीके का, एक कन्वेंशनल तरीके का एक मोहब्बत नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना यादगार रहा, कोई मेमोरीज ऐसी जो कि आप हमेशा अपने साथ में प्रिजर्व करके रखेंगे? जी बहुत पहले जो कुछ दिन थे, आई थिंक जो पहला सीन हमने स्टार्ट में शूट किया वो वही था जब पहला सीन पिक्चर में वो मुझे मिलते हैं ढाबे पे। दैट वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ शूट टुगेदर, एंड आई रिमेम्बर वो जो पहला दिन उनको देख के परफॉर्म करना होता था ना, तो मैं एकदम ही जोन आउट हो जाती थी कई कबार बीच में चलते टेक के, क्योंकि मेरे दिमाग में वो जो मुझे दिख रहा है सामने, वो विजुअल है जो जब से मैंने पिक्चरें देखनी चालू करी हैं कॉलेज में थिएटर में जाके, मैंने ये बड़े स्क्रीन पे देखा है। ये रोमांस से भरी हुई आंखें, ये इमोशन से भरे हुए डायलॉग, जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनकी आवाज़, इट सडनली गेट्स यू इनटू दैट जोन ऑफ अरे ये तो उस पिक्चर के अंदर ऐसे मैंने देखा था इनको बड़े स्क्रीन के ऊपर, सो वो suddenly you can't help but zone out into that deja vu. So there were so many times I had to really like mentally shake myself up and bring back कि भाई अगर ये यहीं पे रहे, नहीं तो इतनी गालियाँ पड़ेंगी ना ये पिक्चर रिलीज होने के बाद कि एक मौका मिला वो भी तुमने मतलब ऐसे गवा दिया. So there were so many times it really took a little effort from me to mentally get my focus back into present. It took me some time, and I have no qualms in admitting that yes, I was. See, my starstruck is not like when I'm starstruck. It doesn't mean कि मैं उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ या मैं सर आप तो बहुत मतलब कितने सही हो, ये हो वो हो. I don't do it like that. So my way of getting starstruck is when I just want to keep observing him silently sitting around him. Just I want him to keep talking or keep performing, and I'll just like keep staring at him. That's how I end up being with people who I'm really starstruck with. I just like, I freeze there looking at them, and I don't want that moment to ever end. So ये मेरा starstruck होने का तरीका है. तो वो कई बारी होता था, which was not that obvious to people thankfully around, वरना तो मुझे निकाल देते पिक्चर से, मुझे डर था कि इससे नहीं हो पा रहा है, इसको निकालो. तो but it took me a few days, and I think I don't know if sir realized it or no, or even if he did, I'm glad that he did not bring it up to make me feel even more awkward. But yeah, I mean, I got through that phase pretty soon because I realized how once in a lifetime opportunity this can be for someone like me. So I want to make sure I make so much of it that I keep getting such opportunities in the future. So I started going in that mode, that I have to make my, get best grades possible in this one-time opportunity that I've gotten. But yeah, it was difficult in the first few days to get out of that starstruck. I literally got stuck there sometimes. Of course, एक और मुझे बहुत दिलचस्प सी बात लगती है आपकी फिल्मोग्राफी में कि जैसे बहुत बार क्या होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, दैट बहुत बार क्या होता है कि हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, एक्ट्रेसेस के एक या दो गाने होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एंड दे हैव certain scenes in which they make their presence felt, but ultimately it's like they're playing a second fiddle to the hero, and but they end up getting a lot of money, they end up getting a lot of shows, and I think popularity, yardsticks with popularity, सब चीज़ें उनके साथ में होती हैं. Other than जुड़वा, I don't think कि आपने ये कभी भी मॉड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करी है, फॉर्मूला को आपने फॉलो करने की कोशिश करी है. Maybe you are taking a harder way by concentrating on performance oriented roles, roles that will have a longer shelf life as a female actor. Is it a conscious decision, or is it something that has just happened? I will actually not take the 100% credit for this, Faridoon, because I feel this is partly because people believe now that I will not do those films only. Right. Abhi kya hua hai, not just those films where it's only about couple of songs and glamour, but generally films where the female presence is lighter than the male's presence. The entire industry for some reason believes that I will not even consider those films, and I don't know why do they feel like that, because as you said, I've done Judwa, I have done Surma, where I've got lesser presence than the guy. Oh, it's not a frivolous role, but I still have way lesser presence than the voice presence. I have done film like Mission Mangal,
where I'm one of the other girls who's not the my character is not taking the center stage there. I have very deliberately chosen these films to, at time and again, to put this across, that don't think that I'm not okay to do lesser parts. It's just about, does that lesser part excite me? Like, do I know I get to do an Uchiya building in Tantanatan? I will do a Judwa for that, because I really want to dance on those songs, and it's a part of my my industry, and I love singing and dancing films as well. I want to do a Mission Mangal because I know that is one important character in the group of characters that end up making that film. I want to do a Surma because somewhere I want to play the softer female character also, which is a challenge for someone like me who is not conventionally that submissive, soft character in real life. So I do take up these things time and again, but strangely, for some reason, nobody in the industry believes that I will be okay doing it. The other day, I remember after the screening, Javed Saab was sitting with me, and he's been very, very kind to me over years, and he really is, makes me feel almost embarrassed at how much he likes me. And I fail to understand sometimes that what have I done for Javed Akhtar to be so impressed with me, and I'm really grateful. But he ended up telling me after the screening that he would really, before he stops writing screenplay story totally, he would really want to write something for me. And amazing. And I was like, are you sure? He's like, yeah, I am sure, but what about you? Because I am. And he was so honest about the fact that he has not written films where the female is the central point. So he was like, I don't have any such story. Will you be okay doing a story where you're not the central character? I'm very scared, of presenting this idea to you also. And I'm like, Javed sir, what are you talking? First of all, why are you scared? He's like, I'm very scared of intelligent women. So I said, oh, you have one back home. He's like, yeah, and what makes you think I'm not scared there? So it was very funny conversation that we had. And he was like, if you feel you can bring in someone who can help me write that female character in the story, I would love to collaborate, but I would really want to write something. Will you be okay to play a part which is not really like the woman-driven storyline? I was like, Javed sir, it is just an honor to be in a film that's written by you. Why not? Right. So he was just so scared to even present that idea. He was not even asking me. He was sure that I will not be okay with a film where I have a lesser part. And he just still wanted to try his luck, he said. So that is the opinion that is floating around in the industry. I also feel I get too drained out, tired sometimes of shouldering my films so regularly, because I have to do, if a hero has to do one film in a year to make his presence felt, I have to do multiple where, I'm shouldering the responsibility, because my films are relatively smaller compared to a film that is driven by a man. So now I also want to have the relief factor sometimes where I want to sit on the back seat and just enjoy, this good drive, which I did in a film like Dunky. And this though I got lucky with the role also. But I was so looking forward to this gift that I have gotten after working so hard for 10 years. That finally I got a film which is driven by these two big men, and I get to sit in the back seat and relax in spite of getting such an amazing role. So these are like rarities of kinds, but I do want to enjoy these relief films in my career, which for some reason industry believes I will not even give a chance. So I really hope they give me a chance to do some films which are, these are relief films for me to do. On a lighter note, मुझे लगता है कि मिशन मंगल जैसी फिल्में आपको करनी चाहिए, बिकॉज फिर आप इंटरव्यूज करती हैं और स्पीकर जीतने के बाद जो आपका ऑस्कर वाला जो आपका दिस इज द नेक्स्ट अभी आ रही है फिल्म, अभी देखना आप करना उसका इंटरव्यू, पता चलेगा आपको। खेल खेल में अक्षय सर की ये फिल्म है कोइंसिडेंटली, विच इज अगेन एन एंसेम्बल कास्ट, उसका भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप करना उसका इंटरव्यू, आप देखना, मैं स्पीकर जीतने के लिए जान लगा दूंगी। But that was the most amazing sight that we discussed in your next interview with Sand Ki Aankh with Bhumi, because you guys fought for that as well. Okay, now you've turned a producer with Outsider Films. I absolutely loved Dhak Dhak. Interestingly, you were not starring in the film, but you supported that film, and what a beautiful film. I think that maybe Fatma's best performance ever. Oh, thank you. I'll tell her that.
Yeah, so you love the fact that it got its validation on OTT. You're not happy with the way it was released in the theaters. Yeah, I felt the film deserved better, deserved more when when we decided to release on theatrical. At least give it a fair chance. I am little not just with Dag Dag, Faridoon, if you see all these medium budget films, small budget films, not really shouldered by the big conventional stars, get this very stepmotherly treatment when they release at the box office. Because nobody wants to invest money in their PR and marketing because they feel it's a futile effort because anyway nobody is going to watch them in theaters. So might as well not put in any effort. OTT doesn't want to release it, putting in the money of PR and marketing. They feel like it's not worth for them. And nor does the studio because they feel they'll not get the return of releasing this film. But everybody wants to be associated with good content. So I don't know how this is going to happen in the future because it is extremely discouraging for producers, new producers especially like me. I don't have a big roster or like a big package of 10 films in which एक बड़ी फिल्म है, एक छोटी है, एक मीडियम है, so सबको पैकेज करके मैं आसानी से बेच सकती हूँ. I am making only one project at a time and I want to take these small, very calculative, thought out steps in the beginning to make a brand that I want to create. But then I need the audience and the partners to understand that we have to show the faith in the project from the word go till the end. And not leave it basis just numbers कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो हेल्प करते हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम बीच में छोड़ देंगे पिक्चर. तो फिर शुरू से या तो ना एसोसिएट करो. So I feel like we are being unfair to mid-budget films and we are not helping newer actors or relatively smaller stars to become big stars. I feel in any business it is important. अगर कोई एक तरह का प्रोडक्ट चल रहा है तो everybody tries to create that product to increase the business. यहाँ पे सब हमें पता है हमारी इंडस्ट्री is star driven. So why don't we work on creating more stars? And how will we create those stars? By giving these good actors films and platforms to showcase their talent so they can turn into stars from just being actors. They become star actors. But not enough is being put in behind these actors to make them star actors. Is why the gap between stars and actors is so huge in our industry where box office is concerned. I'm glad that people gave it a chance on Netflix because it was trending for over 10 days and I got so many beautiful messages after they saw the film and the fact that, again, I didn't feature in it and I was just producing it was a very pleasant surprise for a lot of people who saw my name as just a producer. So I'm very, very happy with the way it's been received on OTT. But I just feel that, we cannot give up on these kind of films. Otherwise, we'll only have one type of content and we'll become a very limited industry if we only go in that direction. Right. And you're calling it outsider films. I think yes. what I've always found very, very, I think, healthy, that you've always been proud of the fact that you're an outsider. You've always stood up for outsiders. But at the same time, you're an extremely relaxed person. I think you are always ready with a laugh. You're not having those bitternesses, that element of bitterness, that that I have been wronged and ye koi ab jhanda uthana types and all that. So which makes it very healthy, and that is why I think you are very popular within the film industry. At the same time, everyone knows that the way Javed Saab said as well, that you are someone who stands up as a strong woman. How do you strike this balance that you have a certain you support certain causes and the fact that where you came from, but at the same time you're not really hating people who are naturally having privileges? See, my problem is I don't hate the sinner. I hate the sin. So I have a problem with the sin and not the sinner. And I'm not an extremist. So I'm not like कि या तो इसको बर्बाद कर दो और इससे मैं unconditional love में हूँ. There are no extremes in my life like that kind of extremes. And as I said, I hate the sin and not the sinner. So, and I followed this policy in every way in my life. And I deliberately try myself. There have been days, where I get really upset about something and then I try to be very bitter inside. And then I realize that I should be better, not bitter. Because this is, by being bitter, I'm just harming my own self. Nothing is going to change outside by me being bitter.
it's just going to affect me internally and eventually externally. So there is no point. So like I was telling someone the other day, there is no point in being that palm tree who's going to stand up straight up front and koi tufan aandhi aayegi and then you'll end up breaking. Then तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा. I would rather be that money plant that grows and finds its way through in whatever kind of a situation by making the presence felt, but in a way that it is not that stubborn and stuck there के मतलब हिलूंगी ही नहीं, वो वाला भी नहीं होनी चाहिए attitude. So I think I've kind of understood कि एक लंबी छलांग, ऊंची छलांग मारने के लिए थोड़े कदम पीछे लेने पड़ते हैं कई बार. And I'm okay with that. So I think that way I'm emotional, but I'm not blindly emotional and aggressive like that. And I think that is what people noticed over a period of time, and thankfully they understand that I'm not bitter. The only time I feel a little wronged or upset is when people try to compare and rate actors and actresses. वो होता है ना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, टॉप 3 एक्ट्रेसेस, टॉप एक्टर, टॉप. मेरे को समझ नहीं आता, अगर 100 मीटर की रेस है और आप सब सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो वो रेस वैलिड है. बट अगर एक बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा आगे से स्टार्ट कर रहा है, तीसरा उसके आगे से स्टार्ट कर रहा है, और एक बंदा तो हर्डल रेस चल रहा है, दूसरा बंदा सिर्फ प्लेन रेस चल रहा है, तो हाउ इज दिस रेस इवन फेयर? सो माई पॉइंट बीइंग दैट there are a lot of others, and everybody has had different privileges in this industry. I also come with certain privileges. Someone else comes with lesser or more privileges. All of us cannot be compared in a race कि अच्छा ये नंबर 1 एक्ट्रेस है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं थे, हमारे जो हर्डल्स हैं वो सेम नहीं है रास्ते में. तो तुम हमारा जो रिजल्ट है तुम कंपेयर नहीं कर सकते. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नेवर बी कंपेयर्ड टुगेदर. सो ये वाला जो चीज होती है ना, जब दे ट्राई टू टेल मी कि दिस वन इज नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2, दैट फॉर मी फील्स लाइक इट्स जस्ट सो रॉन्ग टू क्लासिफाई एक्टर्स लाइक दैट. Other than that, I feel I'm pretty secure and comfortable with where I am. I have no shame in picking up the phone and calling people to get me work or to give me the films that I really want to be a part of, because I know nobody else will pick up that call or send that message, and I'm perfectly fine with that. There is no ego issue there.